So hello students, now we'll discuss about menopause. So first, what is the definition of menopause? It is the permanent cessation of menstrual period. ठीक है? So what is the definition? It is what? It is the permanent cessation of menstrual cycle. Okay. Now what is the reason of this permanent cessation? यहाँ पे क्या होता है? There is a depletion of the ovarian follicles. So what is the cause? Cause is depletion of ovarian follicles. Okay. Now if they ask you what is the age of menopause? So menopausal age क्या होती है? It is 51 years. But अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पे कितनी है? इन डेवलपिंग countries it is around 47 years. Okay. Now there is one period we called it as a climacteric period. What we called it as a climacteric period. इसको हम पेरीमेनोपॉजल पीरियड भी बोलते हैं. We called it as पेरीमेनोपॉजल period. Now what is this climacteric period? Basically it is a transition of reproductive phase to non-reproductive phase. ठीक है? It is what? It is a transition from reproductive age to non-reproductive age. Okay. Now if they ask you what is the age around which this transition happen, so what is your answer? It happens around 39 to 50 years. So basically 39 to 50 years को हम पेरीमेनोपॉजल पीरियड भी बोलते हैं. Now what is the main pathogenesis? What is the pathogenesis behind the menopause? Now see, we said due to the ovarian follicle depletion ये menopause होगा. ठीक है? जब there is a depletion in the ovarian follicle, depletion of ovarian follicle होगा जब, तो क्या होगा? Obviously जब ovarian follicle नहीं है तो estrogen, so अभी there is a depletion of ovarian follicle which leads to what? Which leads to decrease of estrogen and progesterone. दोनों के लेवल कम हो जाएंगे. अब क्या होगा? अब सिग्नल जाएगा हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस को, तो क्या होगा? They will secrete more LH and FSH to stimulate the production of estrogen and progesterone from the ovary. But ओवरी तो फंक्शन ही नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा इवेंचुअली कि एसएच, एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा, वेयर एज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो नाउ दिस विल सेंड सिग्नल्स टू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, और ये क्या करेंगी? दे विल सिक्रीट मोर एफएसएच एंड LH. ठीक है? बट दिस वोंट एक्ट्स ऑन द ओवरी, तो फर्दर क्या होगा?
स्टिल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फिर भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि ओवरी स्टिमुलेट नहीं हो रही, तो इवेंचुअली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जाना शुरू हो जाएगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को और इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूट्राइन साइज, तो क्या होगा? What happened to the size of uterus? It will decrease. It will decrease. And what is the endometrial thickness? मीनोपॉज में कितनी रह जाती है एंडोमेट्रियम की थिकनेस? ये भी कम हो जाएगी. ठीक है, इट विल डिक्रीज. सी, अब अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, what should be the thickness? That should be less than 4 mm. बट अगर हम फीगो की क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, तो अकॉर्डिंग टू फीगो थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन 5. ओके, so what is the pathogenesis? You know, now this is all about pathogenesis of the menopause. Now let's discuss what are the symptoms you wanna see in this female. So symptoms. So जो first symptom आपको देखने को मिलेगा, and this is the most common, earliest characteristic feature of menopause. So it is most common, earliest characteristic feature. और क्या symptom है ये? That is hot flushes. Hot flushes. ठीक है? Basically hot flushes होती क्या है? यहाँ पे female will complain of feeling of warmness, sweating, insomnia, irritability and anxiety. So ये सारे symptoms इकट्ठे आएंगे तो we called it as hot flushes. So it is basically feeling of warm, insomnia होगा इनमें, anxiety will be there, irritability and sweating. Now how you can control these symptoms? So what is the treatment? Obviously you will give estrogen. ठीक है, estrogen to the female. and यहाँ पे commonly हम कौन सा salt use करेंगे? That is tibolone. अभी tibolone क्या है? It is basically combination of estrogen, progesterone and androgen. Estrogen plus progesterone plus androgen. Okay, so this is the treatment of hot flushes. Now what are the other drugs you can use for this? Other drugs, so जो first आता है that is, as this female is experiencing anxiety, for anxiety what we can use? We can use fluoxetine. So we can give fluoxetine to this patient. And if we talk about the acute relief, for acute relief of the symptom, what you can give? You can give clonidine. ठीक है, clonidine आप दे सकते हो. This is alpha-2 blocker. And third drug that you can use is gabapentin. Gabapentin दे सकते हैं. What else you can give? You can give phytoestrogens.
ये फाइटोईस्ट्रोजन क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें आइसोफ्लेवोनॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? आइसोफ्लेवोन्स। और ये कहाँ पे, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें फाइटोईस्ट्रोजन्स होते हैं? तो सोयाबीन इज अ सोर्स ऑफ फाइटोईस्ट्रोजन। सो मीनोपॉज की फीमेल्स को यू कैन रेकमेंड ईटिंग सोयाबीन डेली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम what you're gonna see in case of menopause, that is osteoporosis. Second is osteoporosis. Now for treating the osteoporosis, what you will give? The drug of choice for treatment of osteoporosis is what? Bisphosphonates. So drug of choice is what? Bisphosphonates. बट इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है. What is that side effect? That is, bisphosphonates can lead to gastritis and esophagitis. So what is the side effect? Gastritis and esophagitis. Now, to decrease the side effect of bisphosphonates, what you will tell to your patient that after taking this medication at least 30 minutes तक आपको straight बैठना है, ठीक है। एकदम से मेडिसिन लेने के बाद लेटना नहीं है, सीधा बैठना है, ठीक है। So for this what you can suggest? Sit in upright position for at least 30 minutes after taking the medicine, ठीक है। This is the precaution that you have to suggest your patient. Precaution, okay. Now, what other drugs that you can give to this patient with osteoporosis? So for prevention purpose, you can give either calcium to this patient or vitamin D, ठीक है। This is, just remember, this is for the prevention purpose. It is not the treatment of osteoporosis, okay. Now, there are certain other drugs that you can use for the treatment of osteoporosis. What are those drugs? So, other drugs other than bisphosphonates. So, you can give benzodoxifene. ठीक है, बेंजीडॉक्सिफिन आप दे सकते हो इस पेशेंट को. सेकेंड, व्हाट यू कैन यूज, दैट इज टेरीपैराटाइड. टेरीपैराटाइड you can use. Third, for the treatment of osteoporosis, you can give calcitonin to the patient. Fourth, you can give denosumab. So these are the drugs that you can give for the treatment of osteoporosis. Let's discuss the drug of choice if they ask you, that is bisphosphonates. Now, what is the common side effect? That is gastritis, esophagitis. So to prevent the side effects, what you can suggest to your patient? For sitting upright position in at least for 30 minutes, and then for prevention purposes you can suggest calcium and vitamin D tablets, and after that other drugs that you can use is benzodoxifene, terapeptide, denosumab and calcitonin. So in this way you can treat the osteoporosis. Now
The third symptoms that you're gonna see here, that is senile vaginitis. What is this senile vaginitis? So with age, जो vagina है, that becomes dry. क्या होगा? There will be vaginal dryness. Vaginal dryness will be there. What else? There will be infection. There is a more chance of infection. Infection के chances बढ़ जाएंगे. ठीक है? And further, itching. This will leads to itching also. ठीक है? So how you can treat senile vaginitis? So इसके लिए हम So for treating senile vaginitis, what you can give? You can give estrogen creams. You can give what? Estrogen creams for local application. Okay. Next symptom that you're gonna see in this females are what? That is डिक्रीज लिबिडो. ठीक है, इनमें लिबिडो कम हो जाएगी. एंड हाउ यू गोना मैनेज? फॉर मैनेजमेंट यू कैन गिव एंड्रोजन्स टू दिस फीमेल. एंड्रोजन्स. नाउ व्हाट आर द अदर सिम्टम्स दैट यू गोना सी? There will be increased risk for cardiac diseases. There will be increased risk of cardiac disease. Okay. Next symptom is there will be mood swings as well. Mood swings भी common हो जाते हैं after menopause. Then there will be wrinkling of skin. You know कि जो ईस्ट्रोजन है वो कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. बट अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो ऑब्वियसली there will be wrinkling of the skin. So wrinkling of skin. Next symptom is what? That is there is a more risk of uterine prolapse. Risk of uterine prolapse. ठीक है? So these are the various symptoms. Let's again discuss. First symptom हमने बोला था that was hot flashes. Hot flashes में there will be insomnia, anxiety, irritability, sweating and feeling of warmth. Then second symptom was osteoporosis. For that we use bisphosphonates. Then senile vaginitis. For that we have given the estrogen cream for local application. Then there will be decreased libido or decrease of sexual desire in this female. So for that we will give androgens. And there will be increased risk of cardiac disease. There will be mood swings, wrinkling of the skins, and there will be more risk of uterine prolapse. Now, in these females, mainly in menopausal females, we will go for hormonal replacement therapy. What we gonna do? That is hormonal replacement थेरेपी, जिसको हम HRT भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी we generally use the combination of estrogen plus progesterone. ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हम देते हैं. ठीक है. सी, जो ईस्ट्रोजन है ना, what it will do? It will limit the menopausal symptoms. जो भी सिम्टम आते हैं मीनोपॉज में, that is mainly because of decrease estrogen. तो अगर आप ईस्ट्रोजन दे रहे हो तो obviously what it will do? It will limit menopausal
symptoms. Okay? And प्रोजेस्ट्रॉन हमने क्यों ऐड किया? वाई वी एडेड प्रोजेस्ट्रॉन? बिकॉज सी, अगर आप ओनली ईस्ट्रोजन दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल इस फीमेल में यूट्रस प्रेजेंट है, सी आपने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन कौन सी फीमेल में देना है? जिसमें यूट्रस इज स्टिल इंटैक्ट, ठीक है। बट अगर किसी फीमेल में ऑलरेडी हिस्टेरेक्टोमी हो गई है तो इन दैट केस यू कैन ओनली गिव ईस्ट्रोजन। ओके, सी प्रोजेस्ट्रॉन हमने क्यों दिया इस फीमेल में जिसमें ऑलरेडी यूट्रस इंटैक्ट है? ताकि जब आप ईस्ट्रोजन दो तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? इट विल लीड्स टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन कराता है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ इस फीमेल में तो इन फ्यूचर इट कैन लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर एंड वी डोंट वांट दैट। सो दैट्स व्हाई वी ऐड प्रोजेस्ट्रॉन to anticipate the function of this estrogen hormone. Okay, so क्यों दिया हमने प्रोजेस्ट्रॉन? To prevent the endometrial hyperplasia and bleeding. To prevent endometrial hyperplasia and bleeding, ठीक है। नाउ ये जो हम HRTs, in what way you can give? You can either give this hormones in form of transdermal patches, ठीक है। तो हम फीमेल्स को ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन पैच भी दे सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। व्हाट वी यू कैन गिव? ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन पैच, ठीक है। What is the benefit of giving these patches? ठीक है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोसिस के रिस्क है ना वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इफ यू गिव द टैबलेट्स ना तो ज़्यादा रिस्क होंगे। सो दिस ट्रांसडर्मल पैच इज हैविंग बेनिफिट बिकॉज there will be less thrombotic risk. ओके, और किस वे में आप HRTs दे सकते हो? ऑब्वियसली ओरल ईस्ट्रोजन यू कैन गिव, ओरल ईस्ट्रोजन, इवन आप ओरल प्रोजेस्टिन दे सकते हो, ठीक है। यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ creams as well, ठीक है। So in this way you can give the HRTs. Now what are the risks associated with HRTs? Risk with HRTs. So here there will be more chances of DVT. There will be increased risk for deep vein thrombosis, ठीक है। क्यों देयर विल बी मोर चांसेस? बिकॉज जो HRTs होते हैं ना मेनली दे विल इंक्रीज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर बन गए तो ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज चांसेस फॉर थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कैन अकर, ठीक है। सो DVT हो सकता है। सेकेंड, व्हाट कैन हैपन? देयर इज मोर चांसेस ऑफ स्ट्रोक, even there is a more chances of myocardial infarction, and they also increase the risk of breast cancer, risk for breast cancer. Okay, so these are the risks associated with the HRTs. Now in which conditions the HRTs are contraindicated? So let's discuss contraindications to HRTs. So the first contraindication is what? That is if there is a history of estrogen receptor positive, progesterone receptor positive breast cancer. If the female is already having
ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, तो जब उनमें आप HRTs करोगे तो देयर विल बी more availability of estrogen and progesterone, and that will bind to the and that will bind to the receptor present on the breast, जिसकी वजह से estrogen क्या कराएगा, proliferation कराता है breast tissue की, तो there will be more chances for breast cancer. ठीक है. Second, what is the second contraindication? That is if there is a history of estrogen dependent endometrial cancer. Estrogen dependent endometrial cancer. तो obviously उस केस में भी we will avoid HRTs because again there will be worsening. ठीक है. Third contraindication is the coagulopathy. हमने ऑलरेडी बोला कि जो HRTs हैं वो क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ा देती है और यहाँ पे they can cause, so in case of coagulopathy that's why we don't give HRTs. ठीक है. What is the fourth contraindication? That is deep vein thrombosis. If अगर इनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो जस्ट अवॉइड गिविंग HRTs. इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रायर स्ट्रोक तो उस केस में भी नहीं देना. सिक्स्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज. आर्टरी डिजीज. And then if there is an active liver disease, then next contraindication to HRTs is what? That is if there is an unexplained vaginal bleeding, So see why this is a contraindication. Now for example अगर एक मीनोपॉजल फीमेल में ब्लीडिंग हो रही है तो दैट कैन बी ड्यू टू एंडोमेट्रियल कैंसर. ऊपर से आप उसको HRTs दे रहे हो, मीन्स ईस्ट्रोजन का ईस्ट्रोजन हार्मोन इज देयर ना, सो यू कैन इवन वर्स द कंडीशन ऑफ द फीमेल. सो इसीलिए विदाउट डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस के क्या रीजन है वजाइनल ब्लीडिंग का, नेवर एवर गिव HRT टू दिस पेशेंट. So again, we'll revise the contraindication. First is if there is a history of estrogen positive or progesterone positive breast cancer. Second is if there is a history of estrogen dependent endometrial cancer. Third one is the coagulopathy, obviously क्योंकि ये clotting factors बढ़ा देते हैं. Then DVT और pulmonary embolism, obviously अगर ये clotting factors बढ़ाते हैं तो ज़्यादा there is a more chances of thrombosis with HRTs, and that thrombosis can lead to thromboembolism, and that thromboembolism can even interrupt the pulmonary circulation and can cause pulmonary embolism, and further there will be death of the patient. उसके बाद what is the contraindication? If there is a prior stroke, coronary artery disease, active liver disease or unexplained vaginal bleeding. Now we'll discuss about the primary ovarian insufficiency. Primary ovarian insufficiency. Now this primary ovarian insufficiency is a most common cause of what? That is early menopause. This is the most common cause of early menopause. Early menopause से मेरा मतलब before the age of 40 years this female got the menopause. Okay. प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में मेनली होता क्या है? देयर विल बी इम्पेयर्ड ओवेरियन फंक्शन बिफोर द एज ऑफ 40. ठीक है, देयर इज व्हाट? देयर इज इम्पेयर्ड
ovarian function before 40 years of age. Okay. Now, the presentation and treatment of this condition is similar to the menopause. Same symptom this female is gonna have. So, according to that, you will treat. जैसे हमने menopause में treat किया वैसे ही हम इसमें treat करेंगे. Now, what are the causes of this primary ovarian insufficiency? Let's discuss. If this female went under chemo or radiotherapy, it can lead to primary ovarian insufficiency. So, chemotherapy and radiotherapy. Second cause, what is the second cause? That is familial, means पहले भी there is a history of primary ovarian failure in the family of this female. So, it can be familial. Third cause of this primary insufficiency is what? That is autoimmune disease. Autoimmune diseases. Fourth is, that is genetic disorders. Genetic disorder. और इसमें कौन कौन से genetic disorder आते हैं? That is Fragile X syndrome, or you can say Fragile X mutation carrier, या फिर Turner syndrome. So write it down. Fragile X mutation carrier, and second is the Turner syndrome. Okay. The next cause of this primary ovarian insufficiency is what? That is accidental removal of the ovaries. ठीक है? Accidental removal of ovaries. For example, this patient underwent some surgery, and during that surgery, the doctors accidentally have removed the ovaries. So, in this case, there will be premature ovarian failure. Now, guys, how you gonna diagnose this condition? ठीक है? For diagnosis, first we will check for what? Anti-Mullerian hormone. We'll check for anti-Mullerian hormone. ठीक है? And this anti-Mullerian hormone is actually the best way to diagnose this condition. It is the best for diagnosing the primary ovarian insufficiency. ठीक है? So, जो anti-Mullerian hormone होता है ना, इसकी normal value कितनी होती है? Normally इसकी value जो है that is 2 to 4.6 nanogram per ml. Okay? But अगर इसकी value less than 0.5 nanogram per ml हो, तो this will indicates what? This will indicates the ovarian failure. This will indicate ovarian failure. और ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन का जो हम टेस्ट करते हैं, आप कभी भी कर सकते हो. ठीक है? यू कैन डन दिस एनी डे. ओके. What are the other things? Now, what are the other ways to detect this primary ovarian insufficiency? First is you can go for the hormone FSH hormone level. So, you can go for serum FSH level. ठीक है? और मेनली ये सीरम FSH का लेवल आप कब देखोगे? You will see on the day 3rd. ठीक है? If the level is more than 40 international unit per liter, so this will indicate what? Ovarian failure. See, अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल लेवल क्या होता है FSH का,
So what is your answer? 2 to 6 or you can say 2 to 10 international unit per liter is the normal level of FSH. But if the FSH level is more than 40, then this indicates what? This will indicate the ovarian failure. Okay. Now, what is the second test you can use for the diagnosis of menopause? That is antral follicle count. You can go for antral follicle count. Now if the antral follicle count is less than 6 in one ovary, or if it is less than 10 in both the ovaries, then this will be suggestive of what? This will be suggestive of ovarian failure. Next test that you can do for diagnosing of primary ovarian insufficiency is you can check inhibin B levels. ठीक है? If the levels of inhibin B is less than 45 nanogram per ml, this will also indicates what? This will also indicates ovarian failure. Okay. Then next you can also check for FSH to LH ratio. ठीक है? So FSH to LH ratio. ठीक है? अगर ये ratio, if this ratio is more than 1, then the ovarian failure is your diagnosis. यहाँ पे क्या होगा? Mainly FSH will be more than LH. FSH will be more than LH. Now let's revise this topic again. What is the definition of menopause? Mainly it is a permanent cessation. क्यों होता है? Because of the ovarian failure. Now what is the ideal age? If they ask you, 51 year is the ideal age, and यहाँ पे मेनली क्या होगा? बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, जो HPO एक्सेस है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी. देयर विल बी लेस ईस्ट्रोजन, लेस प्रोजेस्टेरॉन, मोर LH एंड मोर FSH. जस्ट रिमेंबर दिस. एंड यूट्राइन साइज कम हो जाएगा. एंडोमेट्रियल थिकनेस विल ऑल्सो डिक्रीज. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? सो मोस्ट जो कॉमन या अर्लीस्ट या करेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर हम बात करें तो दैट इज हॉट फ्लैशेस. How you gonna treat? By giving the hormones like Tibolon is a drug of choice for hot flushes. इसमें Tibolon actually क्या है? It is a combination of estrogen, progesterone and androgen. Now what are the other drugs you can use for the treatment? That is, you can use fluoxetine, you can use clonidine, you can use gabapentin and phytoestrogens. And what is the richest source of phytoestrogen? That is soybean. After that, second symptom was osteoporosis. The drug of choice is bisphosphonate. Side effect याद रखने हैं इसके क्या क्या हैं और कौन कौन से other drugs you can use for osteoporosis. Just remember this. For senile vaginitis, we were giving the estrogen creams. For decreased libido, androgens we were giving. And then we have discussed about the HRTs, that is hormone replacement therapy. इसमें we will give the combination of estrogen along with progesterone. Estrogen क्या करेगा? जो मेनोपॉज के सिम्टम है उसको ट्रीट करेगा, whereas जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नहीं होने देगा. मीन्स इट विल अपोज द एक्शन ऑफ estrogen activity. Then how can you use the HRTs? You can give it in the oral way, tablet form, and you can also use the patches of these hormones. पैच का यूज क्या है कि पैच की वजह से देयर विल बी डिक्रीज चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, जो कि ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर द रिस्क विद HRTs? देयर विल बी मोर रिस्क ऑफ स्ट्रोक,
there will be more risk of myocardial infarction, there will be increased risk of breast cancer. क्यों? हमने already discuss किया कि breast में अगर ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप दे रहे हो तो ईस्ट्रोजन क्या कराएगा? It will do the proliferation of breast tissue, जिससे ज़्यादा chances हो जाएंगे breast cancer के. Now what are the contraindications to HRTs? We have discussed estrogen receptor positive and progesterone receptor positive breast cancer में नहीं देना. Estrogen dependent endometrial cancer में we never give HRT. We never give HRT in case of DVT or pulmonary embolism. If there is a prior stroke, history of stroke or coronary artery disease, acute liver disease, and in case of unexplained vaginal bleeding, you will never ever give HRT. Just remember these contraindications by heart, okay? Then we have discussed about primary ovarian insufficiency, and this is the most common cause for early menopause. Early menopause से मेरा मतलब है कि before the age of 40 years this female underwent menopause. इसमें क्या होता है? What are the causes? Chemotherapy or radiation. It can be familial. There can be, if there is a autoimmune diseases that can leads to the premature ovarian failure. Then genetic or disorders जो आपने याद रखने हैं. Fragile X mutation carrier, जिस फीमेल में ये म्यूटेशन प्रेजेंट होगी उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे. Then the Turner syndrome. Then if there is an accident removal of ovaries, mainly during the surgery. Now for the diagnosis, we did what? We give anti-Mullerian hormone. We checked the anti-Mullerian hormone levels. Normal was 2 to 4.6, but यहाँ पे क्या होगा? It will be decreased and it will be around 0.5, suggestive of ovarian failure. Then what are the other diagnostic tests you can do? You can check for serum FSH, and here the level of FSH will be more than 40. Then antral follicle count. If the follicles are less than 6 in one ovary or less than 10 in both the ovaries, it is suggestive of ovarian failure. Then you can check for inhibin B levels. If that is less than 45, obviously it is suggestive of ovarian failure, and you can check for FSH to LH ratio. So guys, this is all about menopause. I hope you like this video. Thanks for watching.